Today topic is marginal opportunity cost. What is means of marginal opportunity cost? यानी कि सीमांत अवसर लागत क्या है? Marginal opportunity cost refer to when we produce one more commodity of X, then we sacrifice some units of Y commodity. That sacrifice is the marginal opportunity cost of X commodity. कहने का आशय यह है कि जो हमारे पास संसाधन हैं, उन संसाधनों से हम अगर दो वस्तुएं बना सकते हैं, तो अगर हम एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाते हैं तो उसकी एवज में हमें दूसरी वस्तु की मात्रा को कम करना पड़ता है, क्योंकि पहली वस्तु की मात्रा को कम करने के लिए हमें उसमें से रिसोर्स वहां से उठाकर दूसरी वस्तु को बनाने में काम में लेना पड़ता है। इसलिए जितने भी रिसोर्सेज हमने पहली वस्तु से हटाकर दूसरी वस्तु में लगाए, जितने रिसोर्स लगाए वह एक्स वस्तु की यानी कि दूसरी वस्तु की अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। When we produce one more unit of X commodity, then we sacrifice some unit of Y commodity. That sacrifice is opportunity cost of X commodity. Formula of delta sacrifice upon delta gain. Second name is MRT, marginal rate of transformation. So, do you understand what is means of marginal opportunity cost? Yeah, what is means of marginal opportunity cost? When we produce one more commodity of X, one unit of X commodity, then we sacrifice some unit of Y. That sacrifice of Y unit is opportunity cost of X commodity. Opportunity cost. Do you understand? Next topic is consumers equilibrium. Utility analysis. What is means of utility? What do you think about utility? हिंदी में बोलते हैं इसे उपयोगिता। Anything which are any commodities any commodity which is used by you for satisfaction. You take water, you take mango, you take another any commodity, everything which are used by you for satisfaction. So what it means of utility? Virtue of any commodity which provide you satisfaction, it is called utility. Want satisfying. Want satisfying power of a
कमोडिटी वॉन्ट सेटिस्फाई पावर ऑफ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी की वह पावर जो तुम्हें सेटिस्फाइड करती हो तो वो क्या कहलाती है? यूटिलिटी। It is called utility. We can say utility is equal to satisfaction. Repeat again. Utility analysis. What is means of utility? Virtue of any commodity which provide you satisfaction, it is called utility. किसी भी वस्तु का वह गुण जो आपकी आवश्यकताओं को संतुष्टि प्रदान करता है उसे उपयोगिता कहते हैं। यानी कि उपयोगिता इज इक्वल टू, यानी कि यूटिलिटी इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन, यानी कि उपयोगिता बराबर संतुष्टि। तो इट इज कॉल्ड यूटिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज next topic is ordinal number. Ordinal utility analysis. Cardinal utility analysis. Cardinal utility means संख्यात्मक, काउंटेबल, it is called cardinal utility analysis. What is means of cardinal utility analysis? Cardinal utility can be measured. Utility can be measured in the terms of numbers like 1, 2, 3. It is called cardinal utility analysis. कहने का आशय है कि जब हम यूटिलिटी उपयोगिता को नंबर के रूप में मेजर कर दें या उसको माप लें तो वो क्या कहलाती है? कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस कहलाती है। फॉर द एग्जांपल, यू टेक ए मैंगो, तुमने एक मैंगो लिया, यू टेक ए मैंगो, देन यू गेट 50 यूटिलिटी। इट मीन्स इट इज कार्डिनल नंबर। मैंगो से जो तुम्हें यूटिलिटी मिली, संतुष्टि मिली, वो 50 मिली, तो वी कैन मेजर, यानी कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन द टर्म ऑफ नंबर, तो इट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर या कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। सेकंड वन, ऑर्डिनल। यूटिलिटी एनालिसिस utility cannot be measured in the terms of number. Utility cannot be measured in the terms of number. तो कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर में हम यूटिलिटी को नंबर में नहीं माप सकते, 1, 2, 3 में नहीं माप सकते, बट
but can be measured in rank, like high, low. कहने का से यह है कि हम यूटिलिटी को नंबर नहीं दे सकते। जैसे तुमने आम खाया तो हम उसे नंबर नहीं दे सकते कि ये 50 हमें यूटिलिटी मिली या संतुष्टि हमें 50 मिली, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आम हाई क्लास का था, बहुत अच्छा लगा, या कम अच्छा लगा, या बहुत कम अच्छा लगा। हम उसे रैंक दे सकते हैं, नंबर नहीं दे सकते। तो there are two topic which are described by me. First one, cardinal utility analysis. Cardinal number. What is means of cardinal? Utility can be measured in the term of number like 1, 2, 3. Second one, ordinal utility analysis. Utility cannot be measured in the term of number, but we can measure in rank, low and high and low. This is a second topic which is completed by me. Next topic is total utility. Total utility. Short में we can say TU. Short में we can say TU. Total utility. What is means of total utility? The sum total of utility the sum total of utility which are derived from all units of a commodity, which are consumed by a consumer. What is means of total utility TU? The sum total of utility which are derived from all units of a commodity which are consumed by a consumer. एक कंज्यूमर के द्वारा जितनी भी किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उसने उपभोग किया है, उन सभी इकाइयों से प्राप्त यूटिलिटी यानी प्राप्त संतुष्टि के जोड़ को टोटल यूटिलिटी कहते हैं। इसका फार्मूला बनता है TU इज इक्वल टू सिग्मा M. TU इज इक्वल टू सिग्मा M. Next topic is MU. MU यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी।
What is means of marginal utility? Change in TU when we use one more unit of a commodity. What is means of this line? जब हम एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करते हैं तो उससे कुल यानी कि टोटल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन उस एक इकाई जो कि बढ़ाई गई थी उसकी सीमांत उपयोगिता कहलाती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी इंडिविजुअल यूनिट सेटिस्फैक्शन या इंडिविजुअल यूनिट utility, it is called marginal utility. Change in TU when we use one more unit of a commodity. Formula is MU is equal to TUN minus TUN minus 1. This is a second formula. We have finished two topics, TU and MU. यानी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। TU the sum total of utility which are derived from all units of a commodity which are consumed by a consumer, it is called total utility. What it means of MU, marginal utility? When a consumer use one more unit of a commodity, then change in TU, that change in TU is called MU. Next topic is table and diagram. Units which are consumed by a consumer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total utility, कुल उपयोगिता, MU, marginal utility. 10, 8, 6, 4, 2, 0, minus 2, minus 4. It is the MU. MU decline due to when we use more and more units of a commodity, then MU start decline. हम जैसे जैसे अतिरिक्त इकाई का उपयोग करते जाएंगे प्रत्येक अतिरिक्त इकाई की सीमांत उपयोगिता घटती हुई चली जाती है। अब द सम टोटल ऑफ MU इज इक्वल टू TU। अब इन्हें सबको जोड़ लेंगे तो TU आ जाएगा 10, 18, 24, 28, 30, 28, 24. This is a T. Now I am going to describe graphical presentation of this table. Maximum 30. 4 gap between these two 4. 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. How many quantities? Units of commodity. They are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Units are consumed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This is a units. This is a TU and MU. First of all, we mention TU. 1 per 10, 2 per 18, 3 per 24, 3 per 24, next 28, next
30, next again 30, फिर next 28, next 24. This is a T. This is a T. MU first 10, next 8, 6, 4, 2, 0, -2, -4. This is a MU. This is diagram of TU and MU. So there are three relations between TU and MU. First one, when TU is positive, when MU is positive, then TU increase. Second one, when MU is 0, then TU maximum. When MU negative, when MU is negative, then TU decline. This question is complete. This is a table. This table, MU and TU is mentioned on this blackboard. Next, diagram presentation. There are three relations: positive, 0 and negative. When positive, this is a positive, TU increase. When 0, ये highest, maximum. When negative, decline. There are three increase. This is an increase. There are three relationships between TU and M. This is a day 9 topic is completed. First topic was opportunity cost. This topic is related to last lesson, but consumer equilibrium यानी कि utility analysis are related to next lesson. Thank you. Have a nice day.